नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पेरिस में एआई एक्शन समिट में पीएम मोदी का मानव कल्याण के लिए एआई प्रौद्योगिकी के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर। कहा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में लोगों के जीवन में ला सकता है बदलाव। दिल्ली में इंडिया एनर्जी वीक 2025 की हुई शुरुआत। पीएम ने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर दिया बल। कहा, 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य। एरो इंडिया में राजनाथ सिंह का मित्र देशों से आतंकवाद और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का आह्वान। वैश्विक मंच पर भारत की भागीदारी को बताया जरूरी। संसद के दोनों सदनों में बजट पर चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में चर्चा का देंगी जवाब। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर लगाया भारतीय संस्कृति के खिलाफ होने का आरोप। महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा ने किया स्नान। कल माघ पूर्णिमा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तैयारियों की समीक्षा। वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए यातायात के विशेष इंतजाम। और खबरों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से जुड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में चल रहे एआई सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री का जोर समावेशी, सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से नवाचार और मानव कल्याण के लिए एआई प्रौद्योगिकी के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर है। Reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. प्रधानमंत्री ने कहा, एआई से जुड़ी एक बड़ी आशंका रोजगार खत्म होने को लेकर जताई जा रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि तकनीक ने नए तरीके के रोजगार पैदा किए हैं। जरूरत है लोगों के स्किलिंग और रीस्किलिंग की। Loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created.
we need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत कई स्टार्टअप और तकनीक को विकसित करने पर जोर दे रहा है। रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, ट्रांसलेशन में भारत के कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए एआई मददगार होगा। AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture, and so much more. It can help create a world in which the journey to sustainable development goals becomes easier and faster. फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिणी फ्रांस में मार्से शहर पहुंच रहे हैं। ये यात्रा राजनयिक संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगी, जिसमें भारतीय वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन और उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता सहित प्रमुख कार्यक्रम शामिल होंगे। फ्रांस के शहर मार्से से हमारी ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में बसे शहर मार्से पहुंच रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की छठी आधिकारिक यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देना है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मार्से में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री की 2023 की फ्रांस यात्रा के दौरान इस दूतावास को खोलने का फैसला लिया गया था। फ्रांस के तटीय शहर मार्से में दूतावास खुलने से प्रवासी भारतीयों को दूतावास से जुड़ी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। वहीं भारतीय स्टार्टअप्स और एसएमईज को नियमों को जानने, स्थानीय साझेदार ढूंढने और बाजार में मौजूद अवसरों को समझने का मौका मिलेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजाक सिमिट्री में भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेमेट्री में उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे जो कि मार्से में पहले विश्व युद्ध के दौरान तैनात थे। इसके बाद प्रधानमंत्री इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की साइट का दौरा करेंगे। ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। A visit that both leaders will undertake together to a place called Kadash is the site of the International Thermonuclear Experimental Reactor, which is a project, a high science project in which India is a partner along with a few other countries. यात्रा के दौरान द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की जाएगी। रक्षा, सुरक्षा, असैनिक परमाणु सहयोग और अंतरिक्ष भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। वहीं दोनों देशों के संबंधों को पिछले कुछ साल में और भी विस्तार मिला है। नए क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस कंप्यूटिंग, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास शामिल हैं। डीडी न्यूज के लिए जेसिका तनेजा, मार्से, फ्रांस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इंडिया एनर्जी वीक 2025 की आज से शुरुआत हुई। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने
इंडिया एनर्जी वीक के उद्घाटन समारोह में OALP बिड राउंड X लॉन्च किया। इंडिया एनर्जी वीक एक स्वच्छ, आत्मनिर्भर और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनर्जी लैंडस्केप के लिए वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं और उद्योग के दिग्गजों को एक साथ ला रहा है। सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा, ट्रांजिशन और नवाचार जैसे विषयों पर केंद्रित है। मंत्री स्तरीय और CEO की भागीदारी, प्रदर्शनी स्थल और सत्रों की संख्या के मामले में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम है। इसमें देश विदेश से 700 से ज्यादा एग्जिबिटर, 500 से ज्यादा स्पीकर्स के साथ ही 70,000 डेलीगेट्स भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2025 में वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि भारत बहुत तेज गति से एनर्जी मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। भारत का फोकस मेक इन इंडिया पर है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी वाला देश है। उन्होंने एनर्जी सेक्टर में भारत के लक्ष्यों के बारे में बात की। भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है। इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं। साथियों, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक This summit, we had 700 participants from around the world. And thank you for sketching out the outcomes and the Paris AI actions. And with our friend Prime Minister Narendra Modi, who coordinated work with us, we trust that there will be a solid basis for the future. We have some 10 commitments, around 100 decisions, initiatives and coalitions on subjects which are greatly diverse in range and which will make it possible to tackle the challenges raised in the course of this work. Obviously, I can't sum up everything that's been said in the course of the summit, but I would like to point out 3 key take-home messages. First, we're all convinced that this is a time of innovation and acceleration. And this is why in the course of the discussions, and we've seen it today, that we have this dilemma of what's positive, what's negative, whether we're afraid or feeling there's hope. And we'll see that the actions will speak for themselves. We know that we want to be involved in this. We realize that this is competition, and we are decided to do this because this is a matter of sovereignty, sovereignty for all participants. So we're living a moment of great innovation and extreme speed. It's a time of acceleration of choices and of investments. In the course of the summit, we announced 109 billion in private funding for artificial intelligence. That's from France and international sources. And we just heard 200 billion from the European Union. And so we can see that. Well, we know what's happening in the United States. We know there's been great success in China, and we've had an announcement from our friends in the Gulf about the major investments there. There are investments in India, Canada, and so many others here today. And we know that the race is definitely being run. That's the first thing. But we have to realize that we're all involved in running the race. And the figures that I just gave you show you. And I would like to say how pleased we are that this is a real moment of awakening and ambition to be involved in this in Europe. We want to invest in talent, training younger generations who have more and more positions for research and at university level. We want to invest in data and the consolidation of data. And we need to have a framework for accessing the data. We want to invest in data centers, and the President of the Commission announced the program for setting up a data center in Europe for public research and startups.
and we announced a number of massive-scale data centers funded by the private sector in France, and we made the announcement here at the summit. And the strong point here is there's real ability to have sustainable, low-carbon energy sources, and this is where the French model of civil nuclear power is a real strong point. And together we decided to accelerate work on applications. We've seen this has to be applied science, applications in mobility, in defense and security, and there are a number of large groups in France and international countries have made announcements and signed up contracts with new players in artificial intelligence, with new partnerships, grasping the opportunities here. And we are all convinced that artificial intelligence will be an opportunity for us all to learn better, to have better healthcare, to have better work, and to have a better life within our societies. And this is a society of competition, innovation and sovereignty. But this is a period, as I said, of innovation and acceleration. The second message is how we can build up trust, and to get away from this dilemma of risks on the one side and opportunity on the other, thinking that the only option is regulations which might be an obstacle to innovations. I think that the challenge we are all up against is that governments have to take action, but also civil society needs to act, and private enterprise does too. Major investors need to too. We need to know how we can have trust in artificial intelligence and the use thereof, because that will be the key part of its success. Because if we can't trust it, then we won't have artificial intelligence adopted around the world or spread around the world, and we'll see that in a few years' time there will be lots of our fellow citizens saying we don't want AI in our country. It's a source of problems and negative impact on our lives. Now, what do we need for establishing such a climate of trust? First, you have to have fair and open access. And the question of access is of decisive importance. We need to have wide-ranging access, and we've seen this internationally with players from Asia-Pacific, Latin America, and other regions of the world. And we need to have access for all continents and all countries. And we've seen this with Prime Minister Modi. This is the third path. We don't want a system of those who are in power and the rest of vassals. We want to have this serving the entire planet. And I don't believe that the world will be divided between the global north and the global south, just looking at one another, because if we want to have trust in artificial intelligence, we have to make sure there is equitable access to these innovations in all continents. And this is a challenge for both public authorities and the private sector. And of course, this is a challenge in our societies too. We must not let a divide be established between the older generation and younger generations, or in certain parts of our countries, with differences in access to artificial intelligence. Then the next question is the quality of the data. If we want to trust artificial intelligence, we have to have greater and more consolidated quality data. And that way we will have trust in them and they can be certified. And we want to have models, we want to have open access, but it has to be multiple access. We're all different. You can see it just looking around the auditorium here. And the example we saw from Prime Minister Modi earlier with the left hand and the right hand, we can see the different models. We want open source models and multiple sorts which reflect our diversity, which look like us. And that is why open source and multiple models and opening up databases for the training of such models and the diversity of that and the transparency of algorithms are key elements to establish trust in artificial intelligence. We also want to have a proper respect for privacy. We've heard this in discussions. And we are here in a world where data is so open and we can accelerate innovation with it, but there has to be proper protection of privacy.
And so we need to have a framework to establish trust so that each citizen has the assurance that their privacy is protected. We want a trust framework so that we can make a distinction between deep fakes and proper information. We want a framework that will protect our authorities from cyber attacks and means that we can have a calm environment to work with AI. We want a framework to have proper respect for creativity. And each person creating something has their rights. You get authors' rights, copyright, and so on for artists, reporters, writers, and so on. And we want to have a situation where artificial intelligence is not used for mass control, but we have to have a proper law and order in our environments. We have to have proper arrangements because artificial intelligence needs so much energy, and yet we want to protect our planet and biodiversity. So we have to foster artificial intelligence which will find low-carbon electricity and more frugal models which will make it possible for us to use less energy. Now, what I'm sketching out here are what we could call the commons or the pillars, and they're not other people's problems, and they shouldn't be seen as a problem which innovators are just referring to someone else who would have to deal with them. These are inbuilt problems. They are part and parcel of artificial intelligence, and this is what means that we will be able to trust or not trust artificial intelligence when it becomes part of our lives, our countries, and our population, and we need to have that so that there can be international order. So this concept of trust and some of the basic paradigms that I've just mentioned are the framework that we need and must work with. We've launched the first coalitions, and we have concrete actions. We've got the current AI Foundation, which is a response, and we've got 400 million euros which have already been committed, and France is going to be contributing some 100 million euros, and I would urge you all to be part of this. And you could say it's a public-private partnership, and it will be an answer to this question of trust. And then there's the question of data. We need to have the trust so that we know what type of data there is, what security they have, and what quality the data is. We need to have sustainable AI, and that's going to be part of the whole question of trust, and that's going to give us transparency so that public and private players can be involved. We've also decided on observatories for both social issues and energy issues, and this is the framework which means we'll be able to look at issues such as climate and also accessibility and cover of access to artificial intelligence. So these are the foundations that we've set next to the acceleration so that AI can become and become a source of trust. And basically, it will be what we could call shared or common order. And this brings me to my last argument, and this is that we must defend our way of life, a multilateral way of life, a multiple way of expressing artificial intelligence. 7 years ago, with Prime Minister Trudeau, under the auspices of the G7, which Canada chaired, we launched the Global Partnership on Artificial Intelligence. And it's now housed with the OECD, and we can see the dialogue. There are some 44 countries, there are 44 countries at the moment, will be some 60 in the very near future. And we are working on standards. There are standards with players from different backgrounds and different cultures. The United Nations has the digital compact, the Global Digital Compact, and we've got the Secretary General here mentioned it, and we've got UNESCO, the Francophone Organization, the Council of Europe, and their different areas have worked on this, and we know that these are key organizations, and we can see that in these different organizations, as we can see in this summit here, that we have international governance of artificial intelligence. And this means that on the basis of actions and coalitions which we have now launched, will make it possible for us to consolidate the elements needed for us to have trustworthy
artificial intelligence at this period of acceleration and innovation, and we will be able to set the rules, because we do need these rules. We need it for AI to move forward. This is not being wary of artificial intelligence. It's not running counter to innovation, but it's looking to the future so that we can have an international area where we will avoid our efforts being fragmented. So these are the ideas that I wanted to share with you. And we believe in innovation, we believe in acceleration, we believe in investment, and we also want to have AI which we can consider trustworthy and which will unite the international community. And I would like to conclude with some words of thanks to all of you who have worked on this and the foundations of this joint weather. I would like to thank Anne Bouvrou, the special envoy for this summit, and she did the work on all 5 continents. Thank you to her and her wonderful team, Martin Tisney, Sanat Kosel, Roxana Vasa, Guillaume Poupin, Henri Verdier, Axel Mermebin, and Chloé Goupin, who is the Secretary General of the summit, which has been perfectly organized. Thank you to the ministers, and thank you to the Grand Palais, the Palais de la Découverte, which hosted us here. And thank you one and all for being here. And in conclusion, I would like to invite my friend, Prime Minister Narendra Modi, to come up and say a few words and to make a major announcement. Prime Minister. Friends, today's discussions have brought one thing. There is unity in vision and unity in purpose across stakeholders. I welcome the decision to set up the AI Foundation at the Council for Sustainable AI. I congratulate France and my dear friend President Macron for these initiatives and assure our full support. We must also make the global partnership for AI truly global in nature. It should be more inclusive of the global South and its priorities, concerns, and needs. To build on the momentum of this Action Summit, India would be happy to host the next summit. Thank you. Everybody up for a group photo with the co-hosts, please.
कि उन्होंने कहा कि कई बड़े मुद्दों पर आपसी चर्चा हुई है, लेकिन उसमें से 3 बड़े मुद्दे जो उन्होंने सबके सामने रखे और उन्होंने कहा कि एक तरह से ये 3 टेकअवेज हैं इस पूरे शिखर सम्मेलन के। उसमें उन्होंने कहा, पहला उन्होंने कहा कि इनोवेशन का ये समय है, यानी कि सबको साथ मिलकर इनोवेशन को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसी के साथ उन्होंने एक्सेलरेशन का जिक्र करा, यानी कि एआई तकनीक के साथ तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ स्टार्टअप्स पर तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। तीसरा बेहद अहम उन्होंने कहा कि यही एक तरह से नींव होगी एआई के। अगर हम सस्टेनेबल एआई की बात करते हैं सभी हितधारकों में, सभी स्टेक होल्डर्स में, तो वो विश्वास है। एआई तकनीक की दुनिया में आपसी विश्वास को कैसे बढ़ाया जाए और उसे साथ लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इस पे उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि एआई तकनीक के साथ सामूहिक विकास के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो साइबर चुनौतियों के समाधान पर काम कर सके, यानी कि पारदर्शी और आपसी विश्वास की नींव पर हमें एक सस्टेनेबल एआई के लिए काम करना है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने आमंत्रित किया समापन सत्र में उनके संबोधन के लिए। प्रधानमंत्री ने भी एक तरफ सभी पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनिटी इन विजन और यूनिटी इन पर्पस, ये सभी हितधारकों के बीच आज चर्चा का बड़ा विषय था, यानी कि सभी लोग एक मत पे सहमत हैं कि किस तरह से एआई को लेकर सामूहिक एक तरह से सबके भले के लिए, सबके विश्वास के लिए और सबके विकास के लिए काम किया जा सके। ज़्यादा समावेशी होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि ज़्यादा समावेशी होने की ज़रूरत पे उन्होंने बल दिया, तो उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ को लेकर चलने की ज़रूरत है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत अगला एआई एक्शन समिट की अध्यक्षता करने के लिए उत्सुक है। तो ये तमाम वो बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने भी समापन सत्र में एआई शिखर सम्मेलन के रखी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।